Hello, hi to everyone. Namaskar to all the students of CA Foundation. My dear student, we have completed so many problems in depreciation, right? Now we are into the next type of charging depreciation. Here, what happens, here they maintain the provision for depreciation. What do they maintain? They maintain the provision for depreciation. In such case, how many accounts we have to prepare? We have to prepare 3 accounts. One is asset account. इसमें क्या डालना? Here we have to write 2 bank purchases. What we have to write? 2 bank purchases. Every year just it is to be carried on, brought down. What we have to do? We have to carry down, brought down. Again carry down, brought down. If you purchase second machinery, again we have to write 2 bank. This is M1 purchased, this is M2 purchased. Okay. Sold हुआ तो क्या करना? Please remember, this is a very important point. Please make a keynote in your notes. Please make a keynote in your note. When machinery sold होता है ना, जब क्या लिखना? जब by machinery disposal, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? मशीनरी डिस्पोजल. क्या लेना इधर? कॉस्ट ऑफ मे बी M1 सोल्ड और M2 सोल्ड. मालूम हुआ क्या लिखना? In machinery account, in asset account, we have to write purchases. Carried on, brought down, carried on, brought down. If you purchase M2, again 2 bank M2 purchased. Sold किया तो क्या करना? Sold किया तो वो cost of machinery what you sold, और कौन सा machinery sold करते हैं ना आप, उसको cost लगता है ना, वो cost को हमें किधर डालना, किधर ट्रांसफर करना? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को ट्रांसफर करना. सर इधर मशीनरी में डिप्रिसिएशन नहीं आता? नहीं जी. अंडर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन नेवर बी रिकॉर्डेड इन यूर असेट अकाउंट. मालूम हुआ मैं क्या बोले? प्लीज रिमेंबर, असेट अकाउंट में क्या डालना? जस्ट परचेस अनसोल्ड. परचेस किया तो डेबिट साइड, बिकॉज मशीनरी इंक्रीज, asset increase debit. Sold हुआ तो asset decrease, asset is to be credited. I hope you got it. बाद में क्या करते? Provision for depreciation account डालते. इसमें क्या करना? Every year depreciation आता है ना, और depreciation usually हमें machinery account को लेते थे. In earlier, we used to take the depreciation in machinery account. But now my dear student, depreciation of asset account को नहीं आता. Depreciation is to be recorded in provision for depreciation. By depreciation carry down करना. बाद में brought down, again depreciation carry down करना. बाद में brought down. Again depreciation in third year. This is first year, this is second year, this is third year. Now please remember another important key point. अब तो अपने थर्ड ईयर में और सेकेंड ईयर में मशीनरी बेस है ना, उसके ऊपर टोटल डिप्रिसिएशन रहता है ना. क्या करना हो? डिप्रिसिएशन ऑपोजिट डालना, मशीनरी disposal, that is total depreciation on machinery sold. Please remember this particular point. Are you getting? Whenever you sell the machinery, you work out the total depreciation on that sold machinery. वो total depreciation रहता है ना, उसको disposal account को डालना.
कैसे आप मशीनरी सोल्ड किया तो डिस्पोजल को डालते हैं? When you sold the machinery, the cost of the machinery transfer to machinery disposal. Similarly, वो total depreciation on the sale रहता है ना, वो भी disposal account को डालना. This is a second concept. You need to remember. Sir, how you analyze? Provision for depreciation is a liability. Provision for depreciation is a liability. Depreciation will increase your liability. Credit करना. डिस्पोजल विल डिक्रीज यूर लायबिलिटी, जब इसको डेबिट करना. डिड यू अंडरस्टूड? आई एम टीचिंग इन बोथ द एंगल्स, इन लेडजर वाइज एज वेल एज इन पंचतारेयरू 5 स्टार्स. असेट परचेज किया तो असेट इंक्रीज होता डेबिट करना, असेट सोल्ड किया तो असेट डिक्रीज होता क्रेडिट करना. प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज ए लायबिलिटी. वेन एवर यू चार्ज ए डिप्रिसिएशन, जब आप डिप्रिसिएशन डालते हैं ना, आपका प्रोविजन फॉर लायबिलिटी बढ़ता, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करना, कॉल्ड बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन. जब आपने मशीनरी बेचते हैं ना, तब आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू कम हो जाता, आपका लायबिलिटी डिक्रीज होता, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट करना एज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. हाउ मेनी अकाउंट्स कंप्लीटेड? 2 अकाउंट्स कंप्लीटेड. नाउ आप क्या करना? नाउ आपने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डालना. इधर क्या क्या आता? वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट. सी हियर यू हैव रिटन बाय मशीनरी डिस्पोजल. प्लीज रिमेंबर, इन असेट अकाउंट कॉल्ड इन मशीनरी अकाउंट, you have written by machinery disposal. In machinery disposal we have to write to machinery account, cost of machinery. ये हुआ. बाद में in machinery disposal, in provision for depreciation, please remember, in provision for depreciation you have written to machinery disposal. In machinery disposal we have to write by provision for depreciation. Total depreciation may be M1 or M2, whatever it may be. Cost of M1. If you sold the M1, you take the cost of M1. If you sold the M2, you take the cost of M2. Total depreciation on M1 or M2. बाद में आप sold करते हैं ना, by bank sold. If loss हुआ तो by P&L loss. If there is a profit हुआ है तो to profit and loss profit. मालूम हुआ? These are the 3 separate entries like sold, loss or profit. किया तो आपका मशीनरी अकाउंट तो बैलेंस हो जाना. It should get agree, it should get tally. जब आपका आंसर करेक्ट हो जाता. I explain this concept, my dear student, once again. Please listen with a lot of interest. Only 3 things. Only 3 things. What? One is asset account. Asset account, if purchase किया तो debit करना because asset will increase. Sold किया तो asset will decrease, credit करना. Secondly, provision for depreciation. क्या करना? Depreciation credit करना. Sold किया तो total depreciation debit करना. On what? On disposed machine. Total depreciation on not all the machine, only on the disposed machine, उसको आपने debit करना. Finally, machinery disposal account डालते हैं ना, here we have to write to machinery as a cost of M1 or M2 by provision for depreciation as a total depreciation on M1 or M2. इधर आपने by bank sold डालते, by P&L loss आता, profit हुआ तो to P&L profit डालना. Please remember all these things for your understanding. This is a key point of this provision for depreciation chapter. Okay, shall we move on to the first problem under this method?
Okay, fine. See what happened.